Assalamu alaikum. Now that we have covered the hemostasis, primary and secondary, in quite detail within physiological limits, now we can classify the clotting disorders and the bleeding disorders. So we should start with clotting disorders. Main of them are hemophilia A, B and C. बाकी की लिस्ट आपको अगली स्लाइड में दिखाएंगे. Then another one, von Willebrand disease, in which there is bleeding disorder. Disseminated intravascular coagulation. This is a combination of clotting and bleeding disorder. Then there is thrombosis and embolism. We'll see how it occurs, and we shall briefly mention purpura, which we have already discussed in our previous slides. Let's review quickly some of the clotting factors and effects of their deficiency. The clotting factor 1, the fibrinogen. There can be afibrinogenemia. Afibrinogenemia could be congenital, or it could be due to disseminated intravascular coagulation. When there is so excessive thrombosis in the body that fibrinogen is no more present in the plasma. We shall be discussing these features of disseminated intravascular coagulation later on. So afibrinogenemia could be congenital, that is a rare event, and then there could be due to depletion during pregnancy when there is premature separation of placenta, and it causes disseminated intravascular coagulation. Now we go on to factor number 2, that is prothrombin. इसमें तो था afibrinogenemia, यानी फाइब्रिनोजन खत्म हो गई है. इसमें है hypoprothrombinemia, that is the prothrombin synthesis by the liver is less, and we see that in decreased hepatic synthesis when there is vitamin K deficiency. The factor 5 is another one. This is parahemophilia, and parahemophilia is due to deficiency of factor 5, and this is congenital. ये भी आपका अभी आएगा आगे डिस्कशन में. फैक्टर 7 जो हमारा स्टेबल फैक्टर था, factor 5 was labile factor, factor 7 was stable factor. It is also called convertin. So hypoconvertinemia, it is again a congenital deficiency of this clotting factor. Factor 8 deficiency causes hemophilia A. Another word for this is classic hemophilia. It is a congenital defect. Number 1, it is a congenital defect due to various abnormalities of the gene on X chromosome that codes for factor 8. So it is an inherited disease and it is sex-linked recessive disorder. बाकी जो कुछ भी है इसके बारे में वो आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे. Factor 9 deficiency, this is hemophilia B. It is also called Christmas disease. It is a milder form of hemophilia and it is a congenital disorder. Stewart-Brewer factor deficiency, factor 10 deficiency is congenital. Factor 11 deficiency is congenital, and factor 12 deficiency or the Hagman trait is congenital. Let's start with hemophilia A. Hemophilia A is a disease in which clotting is defective. This is because of an abnormal factor 8 or a deficient factor 8. The abnormal factor 8 would be actually an inactive factor 8 because of some abnormality in the structure.
It is an X-linked recessive disorder, and in the USA it is 1 in 10,000, तो काफी frequent हुआ. Factor 8 has two active components, a large and the other small. अब आपने ये याद रखना है कि जो फैक्टर 8 है उसके दो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, लार्ज कंपोनेंट और स्मॉल कंपोनेंट. द स्मॉलर कंपोनेंट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग. याद आ गया कहाँ पर था? फैक्टर 11 ने जब फैक्टर 9 को एक्टिवेट करना था तो उसके लिए हमें फैक्टर 8 को एक्टिवेटेड फॉर्म में हमें चाहिए था, जिसे थ्रोम्बिन ला के एक्टिवेट करती है और फिर वो आगे चलता है. Abnormally prolonged clotting time and a normal platelet count and normal bleeding time are the features of this hemophilia. Clotting time is prolonged, platelet count is normal, and bleeding time is normal. It presents with severe bleeding episodes after minor injuries. Female is only affected if she is homozygous. अगर दोनों recessive X, अगर दोनों जीन्स जो हैं वो रिसेसिव्स हों फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर, तो फिर फीमेल अफेक्ट होती है, वरना फीमेल इज अ कैरियर. मेल्स में चूंकि एक ही एक्स होता है, तो अगर उसमें वो ट्रांसमिट हो जाए रिसेसिव जीन, तो मेल्स गेट द डिजीज. आमतौर से फीमेल इज अ कैरियर. The treatment for this type of disorder, in which there is excessive bleeding on minor injuries, is giving recombinant factor 8 transfusion. अब recombinant DNA engineering के जरिए you synthesize factor 8 in some bacteria, and then you collect it from there and transfuse it into the patient. This is very effective treatment, but everybody is not so affording, or every time the factor 8 may not be available everywhere. Pakistan में कितना है कितना नहीं, I don't know. So fresh plasma दे सकते हैं, fresh frozen plasma दे सकते हैं, factor 8 concentrate दे सकते हैं, और fresh blood transfusion दे सकते हैं. ठीक है, वैसे factor 8 concentrate भी इतना आसानी से मिलता नहीं है, और मिलेगा भी तो बहुत थोड़ा सा. Coming to the von Willebrand disease, हमने बहुत पढ़ लिया वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के बारे में. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या. दिस इज ए प्लाज्मा प्रोटीन. वॉन विलीब्रैंड फैक्टर is a plasma protein and it is secreted by the endothelial cells. ये ना endothelial cells, they secrete it, and by the platelets. So दो लाइनें आपको डैश नजर आ रही हैं. This is platelet which has secreted the von Willebrand factor, and this is an endothelial which has secreted von Willebrand factor. It binds to exposed collagen. प्लाज्मा में होती है, और जब भी collagen expose होता है, it binds to the exposed collagen, changes its conformation and becomes able to bind the platelets. Thus it forms a bridge between the damaged vessel wall and the platelet. तो यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की वजह से शुरू हो जाती है. So now the deficiency of von Willebrand causes von Willebrand disease, and what it does is it reduces the platelet adhesion. In the last slide you have seen that the platelets are getting attached to the von Willebrand factor, and that von Willebrand factor is attached to the collagen, and in this way they are producing platelet adhesion. Once the von Willebrand factor attaches to the platelet, it activates the platelets, they swell up and degranulate, produce. The granules contain thromboxane A2 and ADP, which causes aggregation of further platelets. So all these things were initiated by attachment of von Willebrand factor at one side to the platelet and at the other side to the collagen. So when this is not there, platelet adhesion decreases. It also
decreases plasma factor 8. The condition can be congenital or acquired. The large von Willebrand molecule is cleaved and inactivated by the plasma metalloprotease. The small von Willebrand molecule is actually factor 8, and the large von Willebrand molecule is the factor that is being inactivated in acquired conditions by the plasma enzymes, and that is why the condition is acquired. Congenital में इसकी deficiency होगी और acquired में बना बनाया molecule जो है वो cleave हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका function नहीं होगा. Some patients with von Willebrand disease are treated with desmopressin. This is a सिंथेटिक वाजोप्रेसिन मॉलिक्यूल. अभी आप लिख लें, अभी आपको इसके कई लेक्चर्स और बाद में सर्कुलेशन में जाकर पता चलेगा वाजोप्रेसिन क्या होता है, और फिर उसके बाद आगे आप जाएंगे जब किडनी में, तब आपको पता चलेगा. सो फिलहाल इतना ही कि some patients with von Willebrand disease are treated with desmopressin. And what does desmopressin do? It stimulates the production of factor 8 by the endothelial cells and the platelets. Particularly people give desmopressin. अब आमतौर से तो आप ये नहीं कहते ना कि चोट लगने वाली है, चलो जी इसकी ट्रीटमेंट के लिए पहले ही वॉन विलीब्रेंड डिजीज दे दो. लेकिन अगर किसी को पता है कि सर्जरी होने वाली है या कोई डेंटल प्रोसीजर होने वाला है, तो वहां पर लोग जो हैं वो फिर दे देते हैं डेस्मोप्रेसिन कुछ दिन पहले, which stimulates the production of factor 8 and the von Willebrand factor, and in this way the disease is managed. Let's now talk about the disseminated intravascular coagulation. This is a serious complication of septicemia. What is septicemia? Septicemia means that the blood, emia, that the blood has gone septic. Septic means infection has excessively invaded, bacteria have excessively invaded the blood, and now they are producing endotoxins or exotoxins, and these toxins are now causing the procoagulants to convert to coagulants, और वो सारा कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड जो है टिश्यू फैक्टर वाला, वो चल पड़ता है, जिसकी वजह से the fibrinogen is converted to fibrin and thrombosis occurs in many small and medium-sized vessels. Even in extensive tissue injury, उसमें सेप्टिसीमिया ना भी हो, अगर किसी को रोड साइड एक्सीडेंट में काफ़ी सारी टिश्यू इंजरी हो गई है, बोन्स में इंजरी हो गई है, जख्म बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो टिश्यू फैक्टर विल एक्सेसिवली एंटर द ब्लड स्ट्रीम और उसमें जगह जगह माइक्रोथ्रोम्बाई बना देगा. ब्लड चलते हुए ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, माइक्रोथ्रोम्बाई ट्रेवल कर रहे होंगे, छोटे छोटे थ्रोम्बाई जो कि फिर स्मॉल वेसल्स में और मीडियम साइड वेसल्स में जाके उनको ब्लॉक कर देंगे. When you check for the platelet count is seen to be low. When you check for the clotting factors, they are also low in the blood because they have already been used up. So when the clotting factors are low and the platelets are low, तो उनमें patients में bleeding हो रही होती है. जब हमने अभी causes पढ़े थे तो हमने सबसे पहले A fibrinogenemia पढ़ा था, deficiency of fibrinogen. उसमें हमने कहा था कि if there is premature separation of placenta from the uterus, तो उसमें भी यही कुछ हो जाता है कि फाइब्रिनोजिन जो है सारी यूज अप हो जाती है, फाइब्रिन बन जाती है और फिर ब्लीडिंग, तो यूट्रस में से फिर ब्लीडिंग होती है, तो उसे किसी तरह आप कंट्रोल नहीं कर सकते. Now when the fibrin is formed, तो बनेगी कैसे, क्योंकि पहले उससे थ्रोम्बिन बन रही थी, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रही थी, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बना रही थी. तो ये कौन से फैक्टर से बन रही थी? टिश्यू फॉस्फोलिपिड्स जो हैं फैक्टर 3,
उनसे बन रही थी। अब फैक्टर 3 जो है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन में कि फैक्टर 3 को जो एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स हैं वो फैक्टर 3 इनहिबिटरी पाथवेज हैं। तो जब फैक्टर 3 इनहिबिटरी पाथवेज जो हैं वो तो नॉर्मल अमाउंट में है, और फैक्टर 3 स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया टिश्यू इंजरी से, तो ये बैलेंस खत्म हो गया, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन बन रही है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से फिर फाइब्रिन बन रही है बहुत ज्यादा। दिस इज कॉल्ड डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड का मतलब है पूरी जगह पर फैली हुई। इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लीडिंग हो गई है, बाहर जाने की भी नौबत ही नहीं। ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉटिंग हो गई है, अभी ब्लड के बाहर निकलने की नौबत नहीं आई। कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, disseminated intravascular coagulation. So we have studied it. You can ask any question. So you have seen this diagram previously when we were talking about the factors that are dependent on vitamin K are synthesized in liver, those clotting factors. Whenever there is decreased absorption of vitamin K, then there will be deficiency of vitamin K in blood, and the synthesis of those clotting factors will be defective, and this will lead to bleeding tendency. After the lecture if you need to. Thrombosis. Thrombosis का मतलब है it is an abnormal formation of clots inside the blood vessels. जो बाहर निकल जाता है उसे हम clot formation कहते हैं, जो blood vessels में होता है उसे हम thrombosis कहते हैं. And this is an abnormal phenomena because हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे coagulants और anticoagulant mechanisms दोनों के दोनों बैलेंस में होते हैं. Procoagulants and anticoagulant mechanisms are present in balance in the blood so that the blood can flow easily within the blood vessels. बात समझ आ रही है ना? तो thrombosis is abnormal formation of clots inside the blood vessels. It can occur with sluggish blood flow. ये मैं आपके साथ एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स में लैमिनर ब्लड फ्लो को डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ उसकी वही बात कि स्लगिश ब्लड फ्लो जब होता है तो कहीं कहीं कोई जो एक्टिवेट हो गया था क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज नॉट washed away, rather it accumulates in the area जहाँ पे blood flow sluggish है. And when the activated clotting factors accumulate, then they start producing thrombus. It also occurs in vessels having atherosclerotic plaques. जिन लोगों की फैट जो है वो एंडोथेलियम के नीचे जमा हो रही है, वहां पर जो है वो एक नाइडस सा बन जाता है जिसके ऊपर आराम से आके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और उसके ऊपर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर थ्रोम्बस बनाना शुरू कर देते हैं. इट कैन कॉज इस्कीमिया ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे फॉर्म. अब अगर ये हार्ट की ब्लड वेसल्स में बन गया है, थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में से ब्लड नहीं गुजरेगा. किडनी, ब्रेन, हर जगह जहां भी ये बनेंगे वहां पर इस्कीमिया हो जाएगा. इस्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. Bits of thrombus may break off and travel in the bloodstream to distant sites. अगर ये थ्रोम्बाई जो हैं ये बड़े हो गए हैं तो ये ब्लड फ्लो इनके पास से किसी बड़ी सी ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो गुजर रहा है तो वो इनको टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड उनको लंबा करता जाएगा, और फिर ये टूट के डायरेक्शन ऑफ द ब्लड में ब्लड वेसल में लंबे होते होते अपनी ओरिजिनल पॉइंट से टूट कर इन द फॉर्म ऑफ एन एम्बुलस दे विल ट्रेवल इन द ब्लड. ऑफ कोर्स दे विल गो टू रिमोट एरियाज. जैसे कि अगर लेग वेन्स में थ्रोम्बोसिस हुई है और वहां से एम्बुलस टूट कर कहाँ जाएगा, इंफीरियर वीना केवा में. इंफीरियर वीना केवा से इट विल गो इनटू द हार्ट, राइट हार्ट, एंड फ्रॉम द राइट हार्ट इट विल गो इनटू द लंग्स. तो क्या करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा एंड दैट विल डैमेज द लंग्स.
So we were talking about thrombosis and now coming to the congenital absence of protein C. This is protein C if it is congenitally absent, or resistance to activated protein C can cause thrombosis. So if protein C, which was going to cause a negative feedback inhibition of the clotting process, if this is deficient, of course, then clotting will go on occurring and thrombosis will occur. If the activated protein C, which has to act on factor 5 and factor 8, if the factor 5 is genetically mutated, then activated protein C will not be able to act on the factor 5, and this will be resistance to factor 5, resistance of the factor 5 to protein C. This can also cause thrombosis. Mutations in the protein S and antithrombin 3 may less commonly increase the incidence of thrombosis. And now there is the same previous slides again shown to you to tell that the clotting and bleeding disorders do include purpura, which could be due to thrombocytopenia, having different levels and different levels of bleeding, and it could be thrombocytopenic purpura in which there is deficiency of thrombocytes. This could be idiopathic thrombocytopenia or secondary thrombocytopenia due to a bone marrow problem, due to deficiency of nutrients in synthesis of megakaryocytes and platelets, due to some drug reactions when the platelets are excessively destroyed, due to hypersplenism when the platelets are excessively destroyed, and due to leukemias when all the energy of the bone marrow is being spent in the formation of abnormal cancer cells, WBCs, and the platelets become deficient. The non-thrombocytopenic purpura will have a normal platelet count, but their activity is lost, and this could be purpura due to allergy, this could be purpura due to infections, this could be purpura due to vitamin C deficiency. इसका नाम है स्कर्वी. ये आप एफएससी में भी पढ़ते हैं. कोलेजन खराब हो तो फिर वो खाली प्लेटलेट्स क्या करेंगे. This could be due to a defect in the platelet function as there is defective adhesiveness. Glycoproteins जो इसको adhesiveness करवाती हैं receptors के साथ मिलकर, वो deficient हो, von Willebrand's factor deficient हो, या cyclooxygenase activity which makes thromboxane A2 as well as prostacyclin, वो activity अगर कम हो, even then there will be bleeding disorder named purpura.